Very good evening to all of you. Welcome back to the Vocab show. So again, we are here with fabulous words, which is going to help you a lot in cracking up your competitive exam. Welcome you all. This is a very good beginning of this show because Java ji ने हमें एक बहुत अच्छा quotation दिया है over here. He is saying that faith to challenge equals recovery, and when you learn to challenge your situation, God speaks. दिस इज द परफेक्ट कोटेशन जावा. हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऐसे मोटिवेशनल कोटेशंस की बिकॉज वी यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो वहाँ पे अपने जो भी आप लोग डिसाइड कर चुके हैं कि आपको सरकारी नौकरी लेना ही लेना है, तो जब तक आप लोग अपनी सिचुएशंस को चैलेंज अप करेंगे तो ऑफ कोर्स गॉड इज गोइंग टू सपोर्ट यू पीपल एंड ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग अप the required targets, right? So let's take up the first article. Today we are again here with the two articles for you guys. So let's take up the first article. Its topic is it's about are physical risk increasing. So this is the topic and let's check up the first word from this article. Can we have the first slide? हमारे साथ बहुत सारे participants भी जुड़ चुके हैं. Welcome you all to the Vocab show. So can we have the first slide for the first word? Okay, the first news line is the fiscal deficit rule has been honored more in breach than in observance, right? So this is the news line and यहाँ से हमने दो words आप लोगों के लिए pick करे हैं. One is fiscal and other is breach. So you people are required to give me the meaning of the first word, that is fiscal. So you people are required to give me the meaning, synonym and antonyms on my comment section. So can we have the meaning of this word with the next slide? Okay, wonderful. This word physical is basically an adjective in nature and its meaning is associated with the financial affairs. Financial बोले तो कोई भी चीज़ जिसमें finances involved रहते हैं, monetary terms में कुछ affairs involved रहते हैं. It is somewhat about मनी का लेना देना, उसके ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात होती है, पेंडिंग कुछ ट्रांजेक्शन्स चल रही होती है. जब फाइनेंशियल अफेयर्स की, मॉनेटरी अफेयर्स की हम लोग बात करते हैं, उससे एसोसिएशन में कोई भी सिचुएशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे परफेक्टली हम लोग इस वर्ड का यूसेज कर सकते हैं. दैट इज फिजिकल. लेट्स टेक अप इट्स मीनिंग इन हिंदी. इट्स इज अबाउट राजकोषीय. तो जहाँ पे अगेन फाइनेंसेस की बात होती है तो वहाँ पे हम इस टर्म को एसोसिएट करते हैं. सिनोनिम्स को टेकअप करते हैं. इट इज अबाउट बजटरी, इकोनॉमिक, पिक्यूनरी, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल. तो जहाँ पे ऑफ कोर्स मॉनेटरी की बातें होती हैं, बजट को लेकर बातें होती हैं, उसका बजट का ऊपर जाना, बजट का नीचे आ जाना. समटाइम्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे भी मॉनेटरी टर्म्स की बातें रहती हैं. तो वहाँ पे ये जो सारे वर्ड्स यूज अप होंगे ये सिनोनिम्स का ग्रुप फॉर्म अप करेंगे for this word, that is physical. This is a descriptive word, so antonyms are quite difficult to trace out because इसके अगर हम लोग इसका negative sense में जाना चाहते हैं, then we used to take up the words like not suitable for the budgetary terms, or it is it was never a financial problem. तो हम लोग negation वाले words को लेके इसके antonyms को form up करते हैं. Let's take up the example of this word. It is the firms accounted as responsible for keeping the tracks of our physical matters. तो जो भी उनका एक firm का जो accountant है, he is wholly solely responsible for handling all the type of physical matters, which whatever it is related to the monetary terms and the financial terms, right? Okay, so let's take up the meaning from your friend side. It is something about monetary and fiscal policy. That's perfect. अश्विन जी, परफेक्टली हम लोग आप लोगों के लिए वेरी सून वी आर गोइंग टू गेट बैक विद द एडिटोरियल शो. आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि द हिंदू न्यूज़पेपर में से हमारा प्रेफरेंस, मैक्सिमम टाइम हमारा प्रेफरेंस रहता है कि हम लोग एडिटोरियल पेज के ऊपर ही डिस्कस करें. एंड दीज टू आर्टिकल्स जो आज आप लोगों के लिए आए हैं, दिस इज फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल पेज ओनली. सो ये भी जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल बिकॉज आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो वहाँ पे इन वर्ड्स के ऊपर नॉलेज होना, इन वर्ड्स के सिनोनिम एटोनिम्स का information आपके पास होना, it is very much important, right? Okay, so we should pay tax for better fiscal policy of country. Income taxes are fiscal department to conduct all type of taxes for country development. That's perfect. So let's take up the next word with the next line.
Okay, the next word is breach. So you people are required to give me the meaning, synonym and antonym of this word breach. इस वर्ड की मीनिंग दीजिए प्लीज कमेंट सेक्शन में. बहुत अच्छे सेंटेंसेस आप लोगों ने दिए हैं फॉर द प्रीवियस वर्ड. सो कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड फॉर इट्स मीनिंग. दिस वर्ड ब्रीच इज बेसिकली अ नाउन इन नेचर एंड इट्स मीनिंग इज अ वायलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, लॉ और कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट. तो जहाँ पे जो भी कोड ऑफ कंडक्ट रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, तो वहाँ पे जब वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट जाता है, जहाँ पे कोई लीगल टर्म्स के ऊपर हम लोग वायलेशन लाते हैं, उसको नहीं मानते हैं, उसमें हम लोग कुछ छेड़खानी करते हैं, उसमें हम लोग नहीं उतर पाते हैं अच्छे से, उसमें कुछ हम लोग अपनी तरफ से कुछ उसमें चेंजेस लेकर आते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, तो वहाँ पे इसका हिंदी में मीनिंग चेक करें तो इट इज़ अबाउट उल्लंघन. तो जहाँ पे वायलेशन होता है सर्टन रूल्स का, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को परफेक्टली यूज कर सकते हैं, दैट इज ब्रीच. So let's take up the synonyms of this word. It is about aperture, break, discontinuity, rupture, rift and fissure. So this is again जहाँ पे continuation में हम लोग नहीं रहते हैं, violation करते हैं किसी भी agreement को, तो वहाँ पे ये words associate होंगे as the synonyms of this word breach. Let's take up the antonym. It is about agreement, closure, misfortune, connection, upholding. सो इट इज़ अबाउट कि जहाँ पे हम लोग उसके अग्रीमेंट में रहते हैं, जहाँ पे हम लोग कनेक्शन में रहते हैं, जहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होता उन रूल्स को, उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए, तब हम लोग इसका टॉनिम्स का ग्रुप फॉर्म करते हैं फॉर दिस वर्ड दैट इज ब्रीच. लेट्स टेक अप द एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड. इट इज अबाउट बाय नॉट पेइंग योर रेंट each month you are executing a breach of contract. तो जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो अगर जिस इंसान की यहाँ पे बात हो रही है, अगर वो अपने रेंट को एवरी मंथ नहीं पे करता है, तो दैट मीन्स व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्चुअली ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट. जो उनका प्रायर हैंड पे साइन अप हुआ होगा, तो उसको वो उल्लंघन कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट का. एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट ही इज नॉट फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट? Okay, so let's take up the example which is given by your peer mates. It is about it may also be a breach confidentially obligations owed by business or a breach statutory duties such as data protection obligations. That perfect, Java. Then we have is a widening breach between government and church. That's also perfect. We should not breach the traffic rules. That's perfect. ओके, मोहित जी हमें बता रहे हैं ब्रीच ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स. दैट्स परफेक्ट. ज्योति जी बता रही हैं इफ एवरी सिटीजन ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज ड्यूटी फॉर गुडनेस ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट विदाउट ब्रीचिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. दैट्स परफेक्ट. सो आप लोगों ने बहुत अच्छे सेंटेंसेस दिए हैं. विद दीज सेंटेंसेस लेट्स टेक अप द नेक्स्ट न्यूज लाइन. द नेक्स्ट न्यूज लाइन इज देयर. इट इज दैट अचीवमेंट हैज येट टू बी emulated again. So the word that we have taken from this news line is emulate. So you people are required to give me the meaning, synonym and antonym for this word emulate in the comment section. Okay, Piyush ji हमें sentence दे रहे हैं. For the previous word it is about people are breaching traffic rules, so accidents are increasing. That's perfect, Piyush. So can we have the next slide for the meaning of this word emulate? Okay, so we have the word emulate. It is a verb basically in nature and its meaning is imitate or copy, strive to equal or excel. तो जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को copy करते हैं, imitate करते हैं, उसके strive हम लोग करते हैं for equivalence and for excellence, तो वहाँ पे perfectly हम लोग इसको कर सकते हैं, use कर सकते हैं इस word को. Let's check out its synonym. Its synonym is about ditto. जब दो चीज़ें बिल्कुल similar होती हैं, उनमें कोई difference नहीं होता है, डिस्टिंग्विश करना उनमें डिफिकल्ट रहता है, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. दैट इज डिटो. वी हैव इमिटेट इज अगेन किसी को कॉपी करना. देन वी हैव फॉलो सूट. इट इज अबाउट मिमिक, फॉलो द फुटप्रिंट्स. तो जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मिमिक्री की बात करें, तो मिमिक्री इज द सेकेंड वर्ड फॉर दिस वर्ड दैट इज म्यूलेट. एंड इसके
फॉलोइंग द फुट स्टेप्स, तो कई बार बात होता है कि कोई इंसान है जो बहुत अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, तो उसके फुट प्रिंट्स को जब एक एडवाइस मिलता है हमें उसके फुट प्रिंट्स को फॉलो करने के लिए, तो वहां पे भी उन सिचुएशंस में भी परफेक्टली हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, दैट इज मिलेट. राइट, सो लेट्स चेक आउट द ऑटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड. तो जहाँ पे चीज़ों को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेफ्ट आउट कर देते हैं, उसको लीव आउट कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, या फिर हम लोग उसको कॉपी नहीं करना चाहते हैं. जो भी इंसान अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है वो तो ऑफकोर्स उसके लिए बेस्ट है, बेटर है, लेकिन हम लोग कभी नहीं चाहते कि हम लोग उसकी चीज़ें या उसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. तो वो जो सारे वर्ड्स वहाँ पे इन सिचुएशंस में, नेगेटिव सिचुएशंस में जो फॉलो अप होते हैं, वो ऑटोनिम्स का ग्रुप फॉर्म करते हैं for this word, that is emulate. So let's check up the example. Example में है emulate after you emulate after your accomplished father, not a trashy celebrity. तो ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ये बहुत ज़्यादा अपना शो ऑफ करते हैं, तो rather than following the celebrities, यहाँ पे एक एडवाइस दिया गया है, you should follow your father. तो अपने फादर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना is much better than following any of the celebrity, right? So let's take up the sentences from your peer mates. We should emulate freedom fighters for the betterment of our country. Emulate personality. Most rulers wish to emulate Alexander the Great. That's perfect, dear. So let's take up the next news line. Okay, so the next news line we have, in fact, it can be shown that there were the government to abide by 3% mandate below 2020 and 21. The debt of GDP ratio would come down to 40% by 2024 and 25, with a nominal growth assumption of 15.5%, right? So this is the news line, and from here we have taken a word for you people, and it is abide. So you people are required to give me the synonym, antonym, and the meaning of this word in the comment section. Okay, so can we have the next slide for this meaning? Well, the meaning of this word abide is tolerate an unpleasant thing or person or endure. किसी चीज़ को जब हम लोग किसी unpleasant thing को या unliked person को जब हम लोग bear करते हैं, हम लोग उसको इंड्योर करते हैं, ना चाहकर भी हम लोग उसकी बातें सुनते हैं या उस चीज़ को अपने पास रखते हैं, तो वहाँ पे परफेक्टली हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अबाइड, एंड दिस इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव इन नेचर. इसका सिनोनिम्स को चेकआउट करते हैं. इट इज़ अबाउट एक्नॉलेज, कंसेंट, स्टैंड फॉर, डेफर, कंसीड एंड बियर. तो जहाँ पे चीज़ों के बारे में एक कॉन्सेंट दिया जाता है, एक ओपिनियन दिया जाता है कि विलिंगली और अनविलिंगली वी आर फॉर दैट थिंग ओनली. तो जहाँ पे ना चाहते हुए भी चीज़ों को बियर अप करना पड़ता है डिफिकल्ट सिचुएशंस में. कई बार होता है, यूजुअली आप लोगों ने, हर एक ने अपनी लाइफ टाइम में फेस करा होगा कि जब टीचर क्लास में कुछ ना कुछ लेक्चर दे रहा होता है और अगर हमें बहुत सारी नींद आई होती है तो हमें विलिंगली और अनविलिंगली हमें उनका लेक्चर सुनना ही पड़ता है, राइट? सो वहाँ पे उन सिचुएशंस में परफेक्टली हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, दैट इज अबाइड. लेट्स टॉक अबाउट द ऑटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड. इट इज अबाउट डिसअलॉय, अवॉइड, कॉन्ट्राडिक्ट, रिफ्यूज, offer, reject and migrate, right? So these are the antonyms जहाँ पे हम लोग disallow करते हैं, avoid करते हैं उन चीज़ों को, नहीं, हम लोग straight away उन चीज़ों के ऊपर एक termination दे देते हैं, एक उसको stop कर देते हैं, ignore करते हैं, neglect कर देते हैं जब हम लोग उन चीज़ों को, तो वहाँ पे antonyms का group form up होता है for this word, that is abide. Let's take up the example. It is about, although my daughter hates the school dress code, she knows she must abide by it. Right, so this is the explanation of this word abide, कि जहाँ पे my daughter hates the school dress code, जहाँ पे वो school dress नहीं पहनना चाहती हैं लेकिन उनको पता है कि उसके बिना गुजारा नहीं होने वाला, she has to wear it, then of course she used to put it on, and in these type of situations we can perfectly make the usage of this word, that is abide, right? Okay, he expected everybody to abide the rules. We should not abide terrorists, and terrorists take action against terrorism. Okay,
पीयूष थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ है. I abide object sometimes which is not necessary for me. It's my country and I abide by the laws. Okay. The IPS officer abided the directions from minister. That's perfect. So can we have the next news line? Okay. So the next news line is, thus, the extra budgetary resources are meant to contribute almost 9.7% of GDP to finance the stipulated outlay as detailed in the nextures or to a minister's speech. So let's take up the first word from this news line. It is about stipulate. So you people are required to give me the meaning, synonym and antonym of this word, that is stipulate, right? Okay, so can we have the meaning of this word stipulate? This word stipulate is basically a verb in nature and its meaning is to insist upon something as a condition of an agreement. तो जहाँ पे हम लोग किसी एक डिसीजन पे, किसी एक ओपिनियन पे हम लोग स्टिपुलेट हो जाते हैं कि दैट इज करेक्ट, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ सकता है, वो चीज़ कुछ फैक्ट है तो है, उसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसमें, तो वहाँ पे परफेक्टली हम लोग इस वर्ड का यूसेज करते हैं, दैट इज स्टिपुलेट. बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग शर्त भी लगाते हैं कि नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा पास आउट करी गई है, दैट इज स्टिपुलेट बाय एनी from any of the angle, it is stipulate. It is not going to go any type of amendment or change. So वहाँ पे perfectly हम लोग इस word को use कर सकते हैं, that is stipulate. Synonyms को चेकआउट करते हैं. It is about impose, guarantee, designate, particularize and postulate, right? So जहाँ पे हम लोग गारंटी देते हैं कुछ चीज़ों की, हम लोग डेजिग्नेट कर देते हैं, पर्टिकुलराइजेशन देते हैं जब हम लोग कि यही फैक्ट है, यही इसका एग्जिस्टेंस है, दिस इज द ओरिजिनलिटी ऑफ द फैक्ट, तो वहाँ पे हम लोग इन सिनोनिम्स का परफेक्टली ग्रुप form up कर सकते हैं for the word stipulate. Let's talk about the antonyms of this word. It is about decline, disagree, discourage and refuse. तो जहाँ पे हम लोग disagreement देते हैं, हम लोग नहीं उनके ऊपर अपना agreement नहीं हम लोग देते हैं, उसकी guarantee हम लोग नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो भी words associate होंगे वो antonyms का group form करेंगे for this word stipulate. Let's take up the example of this word. It is about when buying clothing, I generally avoid items that stipulate dry clean only. तो जहाँ पे चीज़ों के ऊपर strictly लिखा होता है, strictly mention करा होता है dry clean only, तो of course जब हम लोग उन चीज़ों को buy करते हैं वो already जिनके ऊपर marked है कि वो dry clean के लिए ही जाएंगे, home wash नहीं है, तो of course वो अपने आप में expensive आइटम होगा, एक्सपेंसिव आर्टिकल होगा, राइट? तो वहाँ पे उसके बाद में भी उसके ऊपर वॉश करने के लिए, उसके ऊपर ड्राई क्लीन के लिए पैसे लगाने से बेटर है कि उन्होंने अवॉइड करा है उस क्लोथ को बाय करने के लिए, बिकॉज इट इज somewhat it is costly or it is going to be costly in the future as well, right? So let's take up the examples from your peer mates. It is about he stipulated certain conditions before their marriage, okay? It is about contract. It is about the North Korean ambassador stipulated South Korea about sanctions made by US. Principals stipulate new rules of school. That's perfect. So let's take up the next news line. Okay, sorry, it was from the previous news line only, and the word we have is naked. So you people are required to give me meaning, synonym and antonym of this word, that is anarchist. Okay, so this word anarchist is basically a verb in nature and its meaning is a new part of building or dwelling. तो जहाँ पे हम लोग एक नया पार्ट एडअप होता है उस बिल्डिंग में, उस dwelling में, उस रहने वाले एरिया में, जब एक एडिशनल पार्ट कंस्ट्रक्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज anarchist. एंड इसका sorry, this is the wrong one. Synonyms को चेक करते हैं. It is about adjoin, take over, append, एसोसिएट, अटैच, कनेक्ट. तो जहाँ पे हम लोग चीज़ों को एडजॉइन कर देते हैं, उसको एक्सटेंड करने के लिए जब उसको ज्वाइन करा जाता है, अटैच करा जाता है, कनेक्शन में लाया जाता है, तब हम लोग परफेक्टली इस वर्ड का यूजेज कर सकते हैं.
Let's talk about the antonyms of this word. It is about disjointment, disunite, loosen, separate, unlink, सेपरेट. सो बेसिकली अटोनिम्स में बात होता है कि जहाँ पे हम लोग उसमें लिंक को ख़त्म कर देते हैं, जहाँ पे डिटैच कर देते हैं हम लोग चीज़ों को, डिसजॉइन कर देते हैं इन ऑर्डर टू मेक सेपरेट टू थिंग्स. तो वहाँ पे हम लोग परफेक्टली अटोनिम्स का ग्रुप फॉर्म अप करेंगे फॉर दिस वर्ड दैट इज एन एक्ट. Let's take up the example. It is about to eliminate overcrowding. The country is going to add an annex to the high school. तो जहाँ पे overcrowding बहुत ज़्यादा हो चुका है, overcrowding को ख़त्म करने के लिए what they are doing is the country is going to add up annex. तो वो एक additional पार्ट एड अप करेंगे फॉर ड्वेलवर्स, लोगों के रहने के लिए वो बिल्डिंग रेडी अप करेंगे, ड्वेलिंग एरिया रेडी अप करेंगे, विच इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टू द हाई स्कूल. हाई स्कूल से आगे जाके दे आर गोइंग टू बिल्ड अप दैट, राइट? Okay, so marriage is an relationship between two families. To join together, we can annex second floor after construction of the first floor. That's perfect, Piyush. A Butyl junta invaded and annexed territory in the defense of the international law. Okay, perfect, guys. You people are making good usage of sentences. Mishra ji हमें बता रहे हैं you annex sometimes fundamental work to boost yourself. That's perfect. So can we have the next news line? We are going to take up the next article, which is the second article, and as I have told you that we will be taking two articles today. So can we have the next slide for second article? Okay, so the title of the second article is murky mining. So you people are required to give me the meaning, synonym and antonym for the word that is murky. Can we have the next slide for the word murky? So here is the second slide. So please give me the meaning, synonym, antonym of this word that is murky, because this whole article is based on this term only, that is murky. And of course mining, because it is somewhat about mining as well. So let's take up this word. It is murky is basically an adjective in nature and its meaning is डार्क एंड ग्लूमी. तो जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, जहाँ पे कई बार होता है कि दोपहर के अगर 1-2 भी बजे होते हैं, क्लाउड्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, डार्क क्लाउड्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें एक शाम जैसा एटमॉस्फेयर लगता है. जब हम लोग बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शाम हो चुकी है. तो वहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं दैट इट्स अ मर्की वेदर टुडे. So murky means dark and gloomy, right? So let's take up the synonyms of this word. It is about grubby, cloudy, it's about dismal, it is about nebulous, dull, nasty. तो जहाँ पे चीज़ें बहुत डल हो जाती हैं, दिखना क्लैरिटी नहीं रहता है, तो वहाँ पे परफेक्टली हम लोग इन वर्ड्स को यूज अप कर सकते हैं. डल, it is cloudy, it is about grubby. So let's take up the antonyms. It is about apparent, bright, pleasant, sparkling and luminous. तो जहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर रहती हैं, जहाँ पे देखने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ब्राइट रहती हैं चीज़ें, प्लेजेंट वे में रहती हैं, स्पार्कलिंग रहती हैं, तो वहाँ पे antonyms का ग्रुप फॉर्म अप होगा फॉर द वर्ड murky. So let's take up the example. It is about we will need a flashlight to explore the murky caves. तो जहाँ पे हम लोग caves में जाते हैं, caves is गुफा में जब हम लोग जाते हैं जहाँ पे बहुत dark होता है, murky caves मतलब अंधेरी गुफा में जब हम लोग जाते हैं, तब flashlight का बहुत ज़्यादा requirement रहता है in order to explore होता है उसके बारे में information gain up करना, उसके बारे में कुछ जांच करना, तो वहाँ पे हम लोग इस word को perfectly use कर सकते हैं. So the tunnel of Aurangabad is murky. The sky was murky and a thin drizzle was falling. Okay, that's perfect. Neelam ji bata rahi hai, it is about glitter. I enjoyed murky moon. That's perfect, guys. So okay, let's take up the next news line. Okay, so the next news line is, as the court observed this week in the Goa Foundation case, commercial mining activity can be rapacious in absence of clearly laid down and strictly enforced conditions. So we have taken this word from this news line, that is rapacious. So you people are required to give me the meaning, synonym and antonym for this word that is rapacious. Please go through its pronunciation as well, because this is a bit of lengthy word. So try to speak out this word twice or thrice so that you people can learn the pronunciations as well.
Almost 2 years after it last reported on the murky world of insurers selling annuities, the financial watchdog has finally published another review. Okay, that's perfect. So let's take up the meaning of this word rapacious with the next slide. Okay, this word rapacious is basically a noun in nature and its meaning is aggressively greedy. जो इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है, बहुत ज़्यादा लालची होता है, जिसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो इंसान बहुत ग्रीडी नेचर पोजेस करता है। उसको वो कुछ चीज़ें की बात करें तो उसको वो लेना ही लेना है, अपने फ़ायदे नुकसान को बहुत बार सोचने के बाद जब वो इंसान लालची रहता है, वो इंसान बहुत लालची रहता है, वो नहीं देख पाता, लाइक वो दूसरों को सक्सेस की तरफ जाते हुए नहीं देख पाता है। ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज ओन नीड्स। सो वहां पे हम लोग इस टर्म को परफेक्टली यूज कर सकते हैं, दैट इज rapacious. So let's take up the synonyms of this word. It is about ravenous, furious, various. Then we have voracious. तो यहाँ पे perfectly ये वाले words को associate हम लोग कर सकते हैं for a लालची person, I should say. And इसको English में बोले तो it is about rapacious, right? Let's talk about the antonyms of this word rapacious. It is about जो इंसान बहुत satisfied होता है, he is happy with the things whatever he is having right now. It's about starveless. It is about happy filled. तो जहाँ पे उसके दिल में कुछ भी starving जैसा feeling नहीं होता है, he is happy with everything whatever he has. Then example को take up करते हैं. It is about because of its rapacious appetite, the shark is often considered to be more of an eating machine than a living creature. तो जहाँ पे shark की बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा लालची वाला creature माना जाता है, rather than a living creature. एक living creature के होने के बजाय उसको एक eating machine कहा जाता है, because very frequently shark used to eat the things, right? वो बहुत जल्दी जल्दी खाने में बिलीव करते हैं, लाइक हम लोग तो मॉर्निंग का मील लिया तो उसके बाद लंच करते हैं, बट शी यूज्ड टू टेक द मील्स वेरी फ्रीक्वेंटली, राइट? Okay, let's take up the examples from your pyramids. It is about the rapacious nature of a man is quite evident by seeing deforestation all over the world. That's perfect, Tajamul, because of course deforestation बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, and deforestation क्यों है? Because we guys are rapacious in nature. हम लोग बहुत ज़्यादा लालची हैं, हमें चाहिए अपने खुद के convenience के लिए we people are blindly cutting out down the trees, and deforestation को we are the only guys who are responsible for this complete deforestation. It is good if you are rapacious for learning things. Kamlesh Sharma, that's perfect. This कमलेश शर्मा जी ने जो हमें सेंटेंस दिया है, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. हमें लालची बनना चाहिए कुछ सीखने वाली चीजों के, राइट? अश्विन जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, दिस इज़ माय नेचुरल टोन. तो जब आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमें ऑफ कोर्स इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, तो हमें वो पहले सीखना पड़ता है. आप लोग भी इंग्लिश को सीखिए, एंड आप लोगों को तब तक सीखना है जब तक वो हमारा खुद का लैंग्वेज ना बन जाए. चाहे आप कहीं पे भी हो, लाइक अगर मेरी बात करें तो चाहे मैं शो में हूँ, चाहे मैं शो से बाहर हूँ, तो आपका लैंग्वेज ऐसा ही चलना चाहिए. उस टाइम पे परफेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड होल्ड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज. इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि वो हमारा खुद का लैंग्वेज बन जाए, राइट? Everyone has rapacious for government job. This is also perfect, Neelam. Of course, हम लोग सभी लालची हैं कि हम लोगों को government job मिलना चाहिए. That's perfect. So let's take up the next news line. Okay, so the next news line is there on the screen. It is about it inexplicably chose not to exercise its right to view the license as fresh leases that require new environmental impact assessments, right? So this is the news line, and from here we have taken a word, and it is about
inexecutable. So you people are required to go through its pronunciation as well because it's very important, and try to speak out this word twice or thrice and then give me the meaning, synonym and antonym of this word in the comment section. Okay, so let's take up the meaning of this word, that is inexecutable. It is a verb basically in nature, and its meaning is incapable of being explained or interpreted. तो जहाँ पे हम लोग इनकैपेबल रहते हैं कि किसी चीज़ों के ऊपर उसका इंटरप्रिटेशन देने में या उसका एक्सप्लेनेशन देने में, जब हम लोग वी फेल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. कई बार होता है कि कई बार सिचुएशंस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि हम लोग बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमें आगे क्या बोलना चाहिए. वी यूज टू गेट ब्लैंक ऑन द वर्ड्स. तो वहाँ पे परफेक्टली हम लोग इस वर्ड का यूसेज कर सकते हैं, दैट इज इन एक्सप्लिकेबल. तो जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या बोलना है, आई वॉज जस्ट ब्लैंक, तो उन जगह पे यूसेज करना स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम यूसेज करिए एंड ट्राई टू मेक द यूसेज ऑफ दिस वर्ड, राइट. Let's talk about the synonyms. It is about baffling, incomprehensive, strange, mysterious. तो जहाँ पे हम लोग comprehend नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, हमें क्या बोलना है, हमें कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, when we fail to do such type of things, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं यूसेज इन सिनोनिम्स का फॉर द वर्ड दैट इज इनएक्सप्लिकेबल. लेट्स टॉक अबाउट द टॉनिम्स. तो टॉनिम्स की बात करें तो वहाँ पे आता है नॉर्मल, रेगुलर, यूजुअल, एक्सप्लेनेबल. तो जहाँ पे चीज़ें बहुत रेगुलर होती हैं, हम लोग इजीली जस्टिफाई कर देते हैं क्वेश्चंस को, रेगुलर रहती हैं, नॉर्मल होती हैं, तो वहाँ पे टॉनिम्स का ग्रुप अप फॉर्म होगा फॉर दिस वर्ड दैट इज inexplicable. So let's take up the example. It is about the airline was unable to give us a reason for inexplicable departure delay. तो जहाँ पे departure में delay आया था, जो airline के executives थे, they faced a lot of difficulties in explaining the real problem to the travelers or passengers. तो वो एक अच्छे से उनको नहीं बता पा रहे थे that what's the problem. They were just blank on the words कि उनको कैसे satisfy करना है passengers को, that why there is delay in the departures, right? Okay. Sanskrit sloks are inexplicable. That's perfect, Piyush. The advantage of yoga is inexplicable for ill people. Okay, that's perfect. Sometimes we are inexplicable for critical topics. Okay, I got inexplicable about my anger behavior towards my teacher. That's perfect, Mehak. I felt inexplicable while giving my UPS interview before experienced panel today. Okay. So let's take up the next news line. It is already there on our screen. Let's take up that. It is about going forward, the Environment Ministry must display zero tolerance to such violations, receiving its indefensible decision of 2015 to lift its own abeyance order issued against unsustainable mining. So from here we have taken this word that is ambience. So you people are required to give me the meaning, synonym and antonym for this word, right? Okay, so let's take up the meaning of this word ambience. It is basically a noun in nature and its meaning is a state of temporary disuse or suspension. तो जहाँ पे हम लोग temporarily थोड़े समय के लिए चीज़ों को रोक देते हैं, उसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं, उसका डिसकंटिन्यूशन कर देते हैं, तो वहाँ पे परफेक्टली इस वर्ड का हम लोग यूसेज कर सकते हैं, दैट इज अबेयंस. लेट्स टेक अप दिस वर्ड इन हिंदी. इट्स मीनिंग इज दुविधा. तो कुछ प्रॉब्लम आने के कारण जब हम लोग टेम्परेरीली उन चीज़ों को स्टॉप अप करते हैं, देन हम लोग परफेक्टली इस वर्ड का यूसेज कर सकते हैं. लेट्स टेक द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड. इट इज अबाउट लेंटेंसी, पोस्टपोनेंट, रिमिशन, रिसेस, इंटरमिशन. तो जहाँ पे स्टूडेंट्स के स्कूल की बात करें तो वहाँ पे एक रिसेस टाइम होता है, वहाँ पे एक इंटरमिशन रहता है, तो वहाँ पे परफेक्टली हम लोग इन सिनोनिम्स को
synonyms का group form up कर सकते हैं for this word, that is ambience. So let's take up the antonyms of this word. It is about continuation, active, renewal, rival, operational. तो जहाँ पे चीज़ों को हम लोग continuation में रखते हैं, we don't put any type of termination, we don't termination, या फिर हम लोग उसको active रखते हैं, discontinuation हम लोग नहीं लेकर आते हैं, तो वहाँ पे जो words associate होते हैं वो antonyms का group form करते हैं for this word, that is abeyance. Let's take up the example. It is about Jane's cancer has returned after being in abeyance for nearly 2 years. तो 2 years तक वो उसका एक स्टॉपेज रहा है कैंसर के ऊपर, लेकिन आफ्टर 2 years एक बार दोबारा से इमरजेंस हुआ है उसका. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्ड. तो ऐसे ही सेंटेंस में आप लोग भी परफेक्टली इस वर्ड का यूसेज कर सकते हो. ओके, सो freedom of speech was in abeyance during emergency of Indira Gandhi. That's perfect. It is very necessary to abeyance during office work. Of course, हमें break चाहिए होता है. The employee was kept under abeyance when found absent on the duty. Okay, that's perfect. There was warmth here, albeit in abeyance. The promise of life still lay richly upon this house. That's perfect, guys. So this was the last word from today's Vocab Dose show. I hope you people are learning well and you people can put up n number of queries to us for any of your doubt. So let's wind up the show over here with the last word, that was ambience. And goodbye, take care, good night.